Very good morning, dear friends. Myself, Dr. Vikrant Sudhakar Palekar. I am working as an assistant professor in Gokhale Education Society's Arts, Commerce and Science College, Jawahar, Palghar. Welcome in the semester 4 of SYBSc. In this particular paper, under this unit, we are having three topics. First one is amines, second is diazonium salt, and third one is heterocyclic compound. So today we'll start with the amines. In this particular topic, we are going to see the classification and nomenclature of amines. As we know that amines is the one of the very important functional group. So we will see the first basically what are the amines. As we already know that amines are basically the derivatives of ammonia. Ammonia is having formula NH3. So if we see this particular structure, there are three hydrogens which is attached to the nitrogen. So if we see the amines, basically in these amines, the hydrogens which are there, which are being replaced or substituted by alkyl or aryl groups, then this particular functionality get converted into alkyl amines और aryl amines. अगर हम जो अमोनिया के हाइड्रोजन्स है वो वन बाय वन रिप्लेस करते हैं तो by alkyl group or aryl groups, then these particular compounds get converted into amines. As we know that these amines are basically classified into three classes. First one is primary amine having formula RNH2. Then second class is secondary amine where nitrogen is attached to two alkyl group and one hydrogen. And third one is tertiary amine R3N where nitrogen is attached to three alkyl group or aryl group. So we will see one by one classification and nomenclature of this particular amines. As primary amines, as we know that primary amines are the compound where one of three hydrogen atoms of ammonia is replaced by alkyl group or aromatic group. प्राइमरी अमाइंस में क्या किया जाता है, वन जो हाइड्रोजन है अमोनिया का दैट हैज़ बीन रिप्लेस्ड, वो सब्स्टिट्यूट किया जाता है अल्काइल ग्रुप से और अराइल ग्रुप से. सो दैट बिकम्स if you replace that particular hydrogen by alkyl group then it becomes aliphatic primary amines. अगर आप जो है ये प्रोटॉन एरोमेटिक ग्रुप से रिप्लेस करते हैं तो वो बन जाता है एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस. सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस? फर्स्ट वन इज मिथाइलामाइन CH3NH2. ये स्ट्रक्चर का नाम क्या है? इथाइल अमाइन C2H5NH2. So they belong from aliphatic primary amines. Then aromatic primary amines where this group is aromatic. So C6H5NH2, this is well known aniline. Then another example of primary amines is naphthyl, 2-naphthyl amines. So this is the second position. This is first, second, third, fourth, fifth, sixth, seven, 8. So this is a second. It is also called as a beta position. So it is a beta naphthyl amine. So it is a aromatic primary amine. Then secondary amine. How will you define the secondary amine? Secondary amine को हम लोग define कैसे करेंगे? अमोनिया का जो प्रोटॉन्स है उसमें से दो प्रोटॉन्स has been replaced by alkyl or aromatic group. So that becomes secondary amine. यहाँ पे जो दो प्रोटॉन्स है वो रिप्लेस किए जाते हैं. अगर वो अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस किए जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? एलिफेटिक सेकेंडरी अमाइन. अगर वो एरोमेटिक ग्रुप से रिप्लेस किए जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? एरोमेटिक सेकेंडरी अमाइंस. सो लेट अस सी द एग्जांपल्स. दिस इज स्ट्रक्चर वेयर एट बोथ द साइड्स यू विल फाइंड टू मिथाइल ग्रुप्स. सो इट इज नोन एज डाइमिथाइल amine or IUPAC name is N-methyl methanamine. We'll see later on the IUPAC nomenclature. Then this particular structure, one side methyl, another side ethyl. So alphabetical order. Ethyl methyl amine. So this is a secondary amine. Then N-methyl benzene. So methyl aniline. ये एक्चुअली बेसिक स्ट्रक्चर है एनिलिन का. उसमें से एनिलिन का जो एक हाइड्रोजन है दैट हैज़ बीन रिप्लेस बाय CH3 ग्रुप.
So it is a methyl aniline. यहाँ पे both side there is a benzene ring. So this is a diphenylamine. It is a aromatic secondary amine. Then next one is tertiary amine. So tertiary amine, how the tertiary amines are being defined? When all the three hydrogen atoms of ammonia is replaced by three alkyl groups or aromatic ring, then such structures are called as a tertiary amine. अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन्स अगर हम अल्काइल ग्रुप से और आरआइल ग्रुप से रिप्लेस करते हैं तो वो स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? टर्शियरी अमाइन. टर्शियरी अमाइंस आर अगेन क्लासिफाइड एज एलिफेटिक टर्शियरी अमाइंस. वहाँ पे तीनों हाइड्रोजन्स तीनों अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस किए जाते हैं. ये अल्काइल ग्रुप मे बी सेम और दे मे बी डिफरेंट. देन एरोमेटिक टर्शियरी अमाइन, यहाँ पे तीनों जो हाइड्रोजन्स है वो रिप्लेस किए जाते हैं एरोमेटिक रिंग से. सो दैट बिकम्स एरोमेटिक टर्शियरी अमाइन. सो फर्स्ट वी विल सी द एलिफेटिक टर्शियरी अमाइंस. यहाँ पे तीनों ग्रुप कौन से है? मिथाइल है. सो व्हाट इज योर नेम? ट्राइमिथाइल अमीन. तीनों ग्रुप कौन से है? इथाइल. सो इट इज अ ट्राइथाइल अमाइन. देन तीनों ग्रुप एरोमेटिक है या बेंजीन रिंग है. सो इट इज अ नेम इज ट्राइफिनाइल अमाइन. So it belongs to the aromatic tertiary amine. So this is a basic classification of amines: primary, secondary and tertiary. And there is one more class, if we can say, the quaternary amines. So in quaternary amines what happens? Whatever the lone pair present on this particular nitrogen, that has also been utilized to form the bonds, and they form the quaternary ammonium salt. So this is also the fourth type, very well known. Now we will see the IUPAC nomenclature. As we know that IUPAC nomenclature system is universally accepted systems where we can give the nomenclature to each and every organic compound, and that has been accepted universally. So for giving the nomenclature, we know that we have to use three parts. One is prefix, then another is parent compound, and last one is suffix. So in case of the amines, the last letter E from alkane that has been replaced by the amine. So the general name becomes alkana amine. या alkana amine ये नेम में हमने क्या किया है? लास्ट जो लेटर था E, उसकी जगह पे कौन सा वर्ड यूज़ किया है? amines. So that we come to know that this particular compound is from the class of amines. So in general we can say methane. मीथेन में से लास्ट वर्ड अगर हम लोग ई निकाल देंगे और उसके जगह पे अमाइन डाल देंगे तो इट इज़ अ मिथेनामाइन. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मिथेनामाइन? CH3NH2. सेम इज द स्ट्रक्चर फॉर द इथेनामाइन, C2H5NH2. सो रिमेंबर द E हैज बीन रिप्लेस्ड बाय AMINE. सो लेट अस ट्राई टू आंसर द स्ट्रक्चर्स IUPAC ने. ये स्ट्रक्चर का नाम बोलिए. CH3 CH2 CH2 NH2. सो इट इज़ अ 1 प्रोपेनामाइन. 3 कार्बन है, इसके लिए पेरेंट कंपाउंड क्या हो गया? प्रोपेन. देन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, वेदर इट इज अ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, इट इज अ सेकेंडरी वन बिकॉज बोथ साइड देर इज अ अल्काइल ग्रुप. सो ये स्मॉलर ग्रुप है, ये हायर कार्बन से. सो इट बिकम्स सब्स्टिट्यूएंट एंड इट बिकम्स पेरेंट. सो व्हाट इज द नेम? एन मिथाइल इथेनामाइन. यहाँ पे एक ही कार्बन है, ये साइड पे 2 कार्बन है. सो इट बिकम्स पेरेंट वन. सो दैट्स व्हाई द नेम इज इथेनामाइन. एन मिथाइल इथेनामाइन. देन नेक्स्ट वन. सो दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन. सो एट सेकंड नंबर कार्बन देर इज अ CH3O. सो 2 मिथाइल 2 प्रोपेनामाइन. सो दिस इज अ again a primary amine. So 2 methyl 2 propanamine. So it is a primary, secondary or tertiary. Nitrogen seems to be alone. Nitrogen अकेला दिख रहा है. So nitrogen there is no hydrogen. So it is a tertiary amine. So what is the name? Nitrogen को कौन कौन से ग्रुप अटैच है? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल. So propyl becomes parent one because it is having 3 carbon, 2 carbon, 1 carbon. So it becomes parent. So these two are the substituent. So when there are two substituents, follow the alphabetical order. Okay. N ethyl
then N-methyl propanamine. Then this is a diamine, 1 2 carbon, so ethane 1 2 diamine. Then what is the name of this particular structure? Again this is a secondary amine, N-methyl butanamine. यहाँ पे 4 कार्बन है, 1 2 3 4, so N-methyl butanamine. CH2 6 times, so it becomes hexane, so 1,6 hexadiamine. Same, it is a diamine structure. Then cyclic compound. We know that in case of the cyclic compound we have to use the word cyclo. So cyclopentanamine. This is a cyclopentan ring and it is a cyclopentanamine. What is the name? Cyclohexanamine. Then N-methyl pyrrolidine. Remember this particular structure. It is again a not a heterocyclic class but cyclic compound where the nitrogen is tertiary one. So what is the name? N-methyl pyrrolidine. This is a piperidine. It is called as a piperidine. It is very good base also. Piperidine, or many times people used to pronounce as piperidine. So remember these particular structures. This structure you are familiar. We have to give the numbering so that substituent should get minimum number. Substituent को कम से कम नंबर आना चाहिए, ऐसे तरफ से इसको नंबरिंग करनी है. So 2-chloroaniline. Answer this particular structure. This is a tertiary amine, N-dimethyl aminobenzene, or you can also call it as a aniline also, N-dimethyl aniline. Then this structure is very well known to us, benzyl amine. Benzyl ring के बाहर एक CH2 group है, so this total group become benzyl, so it is a benzyl amine. Then this is a 1-naphthyl amine. एक पोजीशन यहाँ पे 1 2, you can give the numbering up to 8. So this is a beta naphthyl amine, or we also call it this as 2-naphthyl amine. This is a 4-nitroaniline. So this is a basic nomenclature where whether this is a aromatic one or aliphatic one. So first try to identify whether it is a primary, secondary or tertiary, and then give the nomenclature. So this is a nomenclature part what we have seen. This particular nomenclature part is not new to you also, because we have seen in earlier classes in FIBSc also. So go through this basic part, amines. We will see the reactions and preparation of amines in this particular topic in the coming lecture. Till then, go through this particular part, try to write the structures and try to write the nomenclature also. Thank you very much. See you in the next session.